अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल, आप देख रहे हैं फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैंने सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है। वो न्यूज़ ये है कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवर हक काकर साहब यूनिवर्सिटी में गए, लंदन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे खिताब किया और उसके बाद बच्चों से सवाल जवाब किए। और सवाल जवाब में बच्चों ने जो बातें उनसे की, जो सवाल किए हैं, वो उनके तमाम की फुटेज के साथ जो सवाल हुए आपके साथ शेयर करूंगा। और आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, वॉच करते हैं और शेयर करते हैं। उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार। अगर आप लोग इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं मजीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और सवाल जो हुए बच्चों से, और जो बच्चों ने सवाल किए और उनका जो हमें जवाब मिले अनवर काकर साहब की तरफ से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके सबसे पहले मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करने वाला हूं जो इमरान खान जब लंदन यूनिवर्सिटी में गया तो इमरान खान के साथ बच्चों ने का क्या बिहेवियर था, वो वीडियो पहले आपके साथ शेयर करता हूं। पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद मजीद आगे बात करते हैं। Hello. Well, first of all, let me apologize for coming late. But I have to tell you that it was not my fault. Number one, we were told that the time was 5:30. And I would have been here at 5:30, but for the news that, and let me congratulate you all on emergency being imposed on us. So this thing about December debate is a bit premature. About our manifestos, because the general is determined to stay in power every which way. It is a defining moment in Pakistan's history. तो नाज़रीन, आपने वो वीडियो देखी, अब आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा भी वज़ीर आज़म नहीं है, सिंपल सा सियासतदान है। वो यूनिवर्सिटी में जाता है और जाते ही स्टेज पे पहला उसका अल्फाज होते हैं कि मैं माफी चाहता हूं कि मुझे यहां आने में देर होगी। और उसके बाद मजीद बच्चों से गपशप होती है, बच्चे भी खुश होते हैं इस बात पे, और ना सिर्फ बच्चे खुश होते हैं बल्कि और भी अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं और सवालों के तमाम के उन्हें तसल्ली बख्श जवाब दिए जाते हैं। और दूसरी तरफ अनवर हक काकर साहब गए तो पहला सवाल जो बच्चों ने इनसे किया वो ये था कि सर, लगता है आपको तालीम और टाइम की कदर नहीं है। तो उस बच्चे ने सवाल किया जब कि आपको तालीम और टाइम की कदर नहीं है कि आप 50 मिनट लेट आए हो, हमारे उस्ताद हमारे इंतजार कर रहे हैं और हम यहां बैठे आपके इंतजार कर रहे थे। तो इस पे क्या जवाब दिया? और उसके बाद फौरन बच्चे ने कहा कि सर, मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं आपकी जहां पे तौहीन कर रहा हूं, जहां आपके साथ कोई मिसबिहेव कर रहा हूं, नहीं। सिर्फ मकसद ये है कि आपको बता दिया जाए कि टाइम काफी के बाद आप यहाँ पे आए हो, आपने जो टाइम दिया था उस टाइम पे नहीं आए। और इसके साथ जो मजीद बात हुई वह ये, उसी बच्चे की वीडियो देखे फिर मजीद बात करते। सर, सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूंगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, साथी इंतजार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतजार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। मगर सर मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल तो ये है कि सर मेरा सवाल जड़ने वाला के ऊपर है। सर पूरे शहर के चर्च के ऊपर आग लगा दी गई
اور کہا ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ سر آفس میں ہی تھے, اگر میری علم میں کمی ہو تو سر پلیز اضافہ کریں, مگر جتنا مجھے علم ہے آپ سر آفس میں تھے اور آپ کے ہوتے یہ ہوا, مگر کیا حکومت نے سر اس کے اوپر ایکشن لیا ہے؟ جی سر آپ گئے, آپ نے سر پرابلی ان کے چرچز اور کے لیے آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہوں گے, مگر کیا یہ سلوشن ہے سر؟ کیا یہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے؟ کتنے سر اور مندر چلیں گے پاکستان میں, کتنے سر اور عیسائیوں چرچ کو آپ سے جلائیں گے تو حکومت کوئی ایکچوئل سلوشن کی طرف آئے گی؟ شکریہ. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ تم اپنی مائنورٹیز کے لیے اتنا اسٹرانگلی فیل کرتے ہو, یہ ایک خوشی کی بات ہے. حالانکہ تم تو بہت مایوس مجھے لگ رہے ہو حکومت کے حوالے سے, ہم مایوس نہیں ہیں آپ کے حوالے سے. 50 منٹ بیٹا میں اس لیے لیٹ آیا کہ میں آپ کے بہاف پہ ایک کیبنٹ میٹنگ سٹارٹ کر چکا تھا, اور کیبنٹ میٹنگ میں جس طرح کی ڈیلیبریشنز اور جس طرح کی ڈسکشن, اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک کبھی پہنچائے کسی بھی کیپیسٹی میں. ضروری نہیں کہ انسان کیبنٹ ممبر ہو سکتا ہے, ایز اے بیوروکریٹ ہو, ایز اے ٹیکنوکریٹ ہو. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بڑے دور رس نتائج آپ کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں, اس کی زندگی کے لیے بھی ہیں. اور میں اگر وقت کو لمٹ کر دوں اور یہ کہوں کہ میں اس میں ایڈیشنل 30 منٹ 35 منٹ یا 40 منٹ نہیں کہوں گا, کیونکہ میرا چندہ وہاں ناراض ہو جائے گا جو کہ انتظار کر رہا ہے, اور وہ ڈیسیجن لوں جو ill informed ہو, پراپر ڈسکشن کا پروڈکٹ نہ ہو. تو جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے نا, پرائمرلی وہ کام میں نہیں کر رہا ہوں گا. مجھے اس کام کے لیے نہیں چنا گیا ہے کہ میں آ کے لمز میں آپ سے بات کروں. یہ میں صرف ایک ایڈیشنل پرسنل پریولیج کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے میں نے کی ہے. یہ ہم دونوں کی ایگریمنٹ سے ہوا. آپ نے اگری کیا کہ ہم آئیں گے, میں نے اگری کیا کہ میں ایڈریس کروں گا. یہ کسی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ میرا بولنا نہ آپ کا سننا. جب ہم والنٹیئر کرتے ہیں تو اس والنٹیئر میں بعض اوقات وقت کی جو تقاضے ہوتے ہیں نا, وہ ریئلسٹکلی آپ کے اساتذہ سے میں 15 منٹ بولا, 20 منٹ بولا, وہ بھی آپ کے جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے کچھ چیزیں تھیں, تو 55 منٹ میں 25 منٹ وہ نکال دو, 35 منٹ رہ گئے. 35 منٹ کی معذرت جو میں نے آپ کو کابینہ کی ایکسپلینیشن دی ہے, شاید وہ اس کو کمپنسیٹ کر دے, کیونکہ ہمارا ایک والنٹیئر انٹریکشن ہے. ہمارا کوئی اسٹرکٹلی پروفیشنلی باؤنڈیڈ پیڈ سروسز ریلیشن شپ نہیں ہے کہ مجھے یہاں 5:05 پر آنا تھا اور تم مایوس ہو گئے اور اس مایوسی کے بدلے میں جو ہے نا میں نے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے. یو ہیڈ آل دا رائٹ ٹو لیو دس ہال. آپ کو کسی نے اس پہ پابند نہیں کرنا تھا, کسی نے برا نہیں کہنا تھا, کیونکہ ایک والنٹیئر پریزنس تھی آپ کی. تو آئندہ ایسی چیزوں پہ مایوس نہ ہوا کرو اور اسٹے پازیٹیو. یہ ہمارے دیکھو, میں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, یہ اس ایج میں نا انسان کو غصہ بڑا آتا ہے. وہ اینگر مینجمنٹ جو ہے نا, دیٹ از دی موسٹ. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں جب بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا, میں اس کو کہتا ہوں اینگر مینجمنٹ. وہ بعد میں جب مجھے کوئی غصہ آتا ہے نا, وہ بھی ٹونٹ کرتے ہوئے مجھے یہی کہتا ہے کہ جی اینگر مینجمنٹ کرو. تو چیزوں کو ریلیٹیولی ہم ہیومنسٹک لیول پہ تھوڑا سا نارمل لیتے ہیں. یہ بہت سختی ہم نے ایک دوسرے کے لیے بنا لی ہے, تھوڑا سا ایز ڈاؤن کرتے ہیں. تو ناظرین, آپ نے اس بچے کی ویڈیو بھی دیکھی کہ بچے نے کیا جواب دیا, کیا سوال کیا. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بچوں کی ویڈیو فوٹیج ہے میرے پاس, جو میں سے ایک نے یہ سوال کیا کہ سر میں 9 مئی کی مذمت بھی کرتا ہوں, لیکن ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے میں سے پہلے واقعہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی, کیونکہ یہ مسئلے مسائل پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے تھے, ہو گئے. لیکن کراچی میں انتخاب ہوتا ہے میئر کی سیٹ کے, تو پی ٹی آئی کے ساتھ یہ مسئلے ہو جاتے ہیں, پی ٹی آئی کے بندے غائب ہو جاتے ہیں. تو وہاں پہ پی پی اور جتنے بھی پی ٹی آئی کے بندے تھے, کراچی میئر کی سیٹ, تو پی پی کا بندہ میئر بن گیا. وہ کیسے؟ تو اس پہ بھی یہی انور کاکر صاحب نے جو روٹین میں کام کر رہے تھے کہ پانی کی کمی پوری کرنی جسم میں, جو کہ بچوں نے بہت اچھے سے کروائی, کیونکہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ جسم میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے, اور انوار کاکر صاحب کی پانی کی کمی بچوں نے پوری کروا دی.
और ना सिर्फ बच्चों ने पानी की कमी पूरी करवाई बल्कि सवाल इस तरह के किए कि जिस पे नवाब हक काकर साहब यही सही करते रहे लेकिन सही तरीके से उन्हें गाइड नहीं कर सके, ना सही जवाब दे सके। तो ये सारी वीडियोस एक साथ ही चलाने लगा, पहले ये देखिए, उसके बाद एक अफगानी बंदा है जो अनवर हक काकर साहब के बारे में कुछ कह रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन वो लास्ट पे पहले आप ये सारी वीडियोस देख लें। My question stems from the previous question, which was on the election date. But when you look at the election process, what measures would you as a caretaker government be taking to avoid all the unconstitutional or any external undemocratic factors intervening into the electoral process, which we have been observing throughout the history of Pakistan? And from that, I would use the example of the recent elections which just happened in Karachi, where PTI and Jamaat-e-Islami collectively they won a majority, but I don't know what happened. सारे लोग मई की मजम्मत करते हैं, लेकिन PTI वाले सारे गायब हो गए मेयर चूज करने से पहले, और करते कराते इवेंचुअली आई थिंक PP का ही चेयर बना था, PP का एक चेयरमैन मेयर इलेक्ट हुआ था. I see this happening on a larger scale as well, and yeah, you as a caretaker government, I think, can have an impact on regulating the election commissioner. So over to you. Once we are done with the clapping part, I'll start. Look, let's have an honest conversation rather than a clever one. Okay? And I want all of you to think in an honest manner. Pakistan is a transitional democracy. What is a transitional democracy? It's a subject which is taught in many universities around the world. We are not a settled democracy. There was a democracy in the Europe. It has taken its own shape, where it morphed from dictatorship to civilian supremacy, and it took them few centuries. It was not that easy journey. We want to have it a bit easy way, just having few conversation here in the halls and get all those subtle questions which is related to political power, economic power and social power. There are two instances in history. One is called French Revolution and the other is called Glorious Revolution, which was in the case of James I, who fled, and the power was transformed from the monarchy to the parliament in English case. This was called Glorious Revolution because it was bloodless. And the other one, I'm sure you are aware of the guillotines and the rest of the experiments related to that. And it was a bit gory and ugly. When you want to have a transitional democracy morphed into a settled democracy, there has to be a process. First of all, we are a transitional democracy, we are not a settled democracy. All the PTI or the pro-PTI people are talking about the democratic reforms, electoral reforms, post ouster of PTI's government. Prior to that, you do not see that narrative coming from their cadre and their leadership. As you refer to a situation where the outcome was for the favor of a PPP candidate, do you remember what happened with the Chairman Senate? Who did it? Just forget it. Who did it? All of you know. All of you know. I was also part of it. But what I am referring over here is that if we start to cherry picking and we want to rationalize a narrative, we will never reach that destination. We need to settle on certain principles. And those principles should be beyond political parties. It should be for the greater social order. It may sometimes suit PPP, it may suit sometime PMLN, it may suit sometime PTI or JUI for that matter. So we have to be very cautious when we design principles. That's why laws, when they are
meant or when they are made, we need to think them through. Unfortunately, what happens in the parliament, I've been part of the parliament, that the different leadership of different political parties, they agree on it and they pass it on to their members, and we are just there to sign and put our thumbs on that. No one discusses the law either on the floor of the parliament or outside the parliament or even in media. How many times you have seen talk shows on any coming legislation? Just raise your hand. How many of you have seen? I can beg, not a single time. Okay, ye bachchi inse pucho. So, sir, amidst the declining economic growth, increasing debt, political instability and whatnot, I am genuinely curious that why did you feel the need to come to LUMS and address the students here? No, it's not, I'm sorry, it's not a humiliating question. No, I don't get humiliated by I am genuinely curious that amidst all these situations and conditions that are happening in Pakistan and are affecting the people, why did you feel like, what was the motive behind this invite, or rather you're coming to LUMS? I want to know. Thanks. You know, not just like yourself, but I do get puzzled by all these challenges which we are in the midst of it. Political, social, economic, all of it. And on the top of that, I've got a role also to play, to respond to all these challenges. And while I am dispensing all these duties of my constitutional duties, I had a plan to go to all the capitals of all the provinces. And Lahore was the last, unfortunately. I did not come to Punjab. I did come to Janawala when that incident occurred, but didn't come to Punjab's capital, Lahore. And when we were discussing my visit here in Lahore, the idea to come to LUMS fascinated me so much because I wanted to see that are there genuinely people in our generation who can take up to the challenges of all that in which I find myself in the midst as in a deep crisis. You also find yourself. Because when I come across other sections of the society, I at times am not that hopeful. Let me be very honest. And I always am looking for the solution-based and answers that where and how can we get out of it, and who would be the people and the human resource and the individuals who would play a role to turn around this, because the crisis is there. No one can deny that. You might have a different approach to resolve that crisis. I may have a different approach to that. But we do need a kind of human resource and individuals who could be engineers of social change, who could be contributors towards the settlement of this crisis. And every nation and any nation has taken such paths. So where do we get our raw material? LUMS is one answer. IBA, another one. GIK, third one. And there are few others also. So this is one of the reasons that I was very much attracted towards the institution of LUMS. And I decided that I have to be here, and that's why I'm here. And I'm sorry if you are disappointed. This was one of the reasons. So, and I'm very encouraged, by the way. One more? Yeah, chal tu kar. Assalamu alaikum, sir. Inshallah, I'll come again. Inshallah. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। अगर हम केपी और बलूचिस्तान की बात करें, अगर हम केपी और बलूचिस्तान की बात करें तो हमने पिछले 2 डेकेड्स में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म से बहुत सफर किया है। लेकिन हमारी जो स्टेट है और पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी एक सॉलिड यूनिफाइड पॉलिसी नहीं रही है इस एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म से मुतालिक। फॉर इंस्टेंस, टीटीपी को पहले आजाद छोड़ा गया, फिर स्वात ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद जनरल फैज साहब आए, उन्होंने उनको रिलोकेट करने की कोशिश की ट्राइबल एरियाज में,
फिर अब अफगान हुकूमत के साथ मिलकर उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। इसकी वजह से जो पश्तून और बलोच यूथ है उनमें एक एंटी स्टेट और एक एंटी आर्मी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो कि आपको भी पता होगा, और जो ट्रांसलेट करता है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में। फॉर इंस्टेंस पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज व्हाई has the state or the political leadership, especially of KP and Balochistan, not been able to have this single unified policy against all sorts of terrorism? So, and what's the solution? How do we avoid this kind of dilemma that we are in? Where are you from? I'm from Ardan, KP. Pukhtunya alaka? Pukhtunya. Kena. I mean, I'm so happy that you raised this, honest to God. एक तो ये जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं ना, जो अदर प्रोविंसेस के, पर्टिकुलरली सिंध और पंजाब, दे आर वेरी नाइव, दे at times don't know, or they have not been through the experiences probably which the people from KP and Balochistan has gone through. And according to one of your colleague, that they are more aware. I feel politically our people are more conscious than these urban center kids. And no offense, it's just a political conversation. Our people have been more active in the movement of MRD, they have been more conscious in contributing movement against one unit, so on and so forth. So our youth, our political leadership have been very, very active politically. This is what I'm referring to. But the urban centers has more advantages. The political side, these rural class have been more contributing towards shaping the political landscape of Pakistan. First of all, what should be the relationship of violence and state? Let's address this question first. Let's bring it in a chronological order. The state should have monopoly over violence. If we settle on this question, the later on following chronological order can be explored and understood quite well. Now, what happens that a group emerges within the society and it wants to have a shareholding in the company of the state, and it says, no, I also have got the right to violence. If state can be violent, why not me? And for the political reasons that I will tell state how to translate its foreign policy. I will tell state whom to align with. I will tell state on the basis of either religion, ethnicity, whatever. In our case, religion and ethnicity too. What is TTP? Why TTP is killing us? Because they feel that we sided with the Americans in the war on terror. This is the prime criticism of this. So they want to determine the foreign policy on all of us through tool of violence. That if you do not change this policy of yours, I will blow myself and I will kill you. This is what exactly we are doing. Sir, I absolutely agree. There needs to be, a documentation of all the citizens of Pakistan, and we obviously cannot proceed without having Nadra cards, without having CNICs, all of that. They also cannot then access the healthcare system and other provisions. I completely agree with you there. What we saw this morning was people being loaded into cargo trucks, and I don't know if you would want to deny the Dawn news report as completely false, in which circumstance this conversation would not be happening, but 2 people have died in the legal process of deportation that is happening. Some 90,000 people have been killed in this country, while some sort of role of such individuals has been identified and concluded by the authorities in this country. I mean, I am pained too, as like you are pained by these 2 deaths. There are many deaths on all the sides. Are we for the deaths? No. Has an accident happened? I will see into that. Was it deliberate? No. We're not murderers. Come on. Absolutely. I'm not saying that we right? are. Yeah. And sometime, what happened on the boats in and around Mediterranean.
when people watched them criminally when they were drowning. Pakistan has not done that. What happens in the strong conservative immigration regime of Australia? They are created islands where they do not allow anyone to come to their shores and take advantage of their asylum laws. So what we are doing over here this morning, I had a cabinet meeting in which I think so there would be few who were sitting there, that we have to ensure the dignity of the people, because they would be vulnerable, there would be women, there would be children, and we cannot give license to our own either police agencies or other state agencies to take advantage of these vulnerable groups. I've instructed my interior minister that it should get translated to the execution level, to the implementation level. We are trying. I am a Pashtun myself. Most of them, they come from my ethnicity. So I won't be insensitive to the cultural requirements, to other humanistic requirements. All I can assure you that we are equally decent human beings, just like yourself. If you are feeling for these two deaths, trust me, we do too. And we not just feel for them, we try to rectify also that something bad does not happen, and at the same time our policies get implemented too. Your vision for Pakistan, which this session was supposed to be about, right? So does it involve following the constitution? Like following the constitution? Yeah, because after the Punjab and KP governments got dissolved, you're supposed to hold elections in 90 days. Why haven't we held elections yet? I'm joining. Shall I? First of all, I have come across so many people that like I am the product of a putsch, a forceful takeover of a government. I feel like I'm a product of a military takeover, and I had to respond to such challenging question. In fact, I am the product of a constitutional order, which you are referring to. There was a leader of the House in an assembly which was probably elected by all of you or many of you, and there was a leader of opposition which was again elected by many of you. There would be many questions and views about the individuals, but this is what Constitution refers to as a procedure. They agreed on my name, and I am so-called product of that constitutional order. So at least we are interacting in a civil, normal, and constitutional manner. There is nothing unconstitutional about it. When will be the elections? The outgoing parliament, they have passed a law. A law, many of students here probably would be the graduates of law, that the election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance, the security, and others. And once that requirement is asked of us, I can assure you that we will fulfill our duty. KP and Punjab's election was prior to our coming. And I can only refer to that there is an article which is 254 in Constitution also. And that says that if something is late, does not make it unconstitutional. So whenever you
go and find out it in the Constitution. There is an article 254. Oh, yes, I'm sure it's 254. Go through that. Unfortunately, sometime if due to circumstances, any act, if it is late for certain reason, does not make it unconstitutional just on the basis that it has happened late. Thank you. Thank you so much, sir, and it's an honor and privilege to have you in front of us. Encouraging us that LUMS students, we seek knowledge, we seek originality. It's very heartening, but then I harken back to earlier times. A few months ago, right at the start of your tenureship, when you talked about the social contract, you talked about the Pakistan social contract with its citizens. It should only have a primary purpose. That is to ensure law and order. And I believe that goes against the very statement you gave right now about encouraging originality and seeking knowledge and giving an enabling environment. I believe in order to give an enabling environment to the youth of this nation, there has to be two things: freedom of expression and freedom from discrimination. I believe we here, LUMS students, people of a very, very privileged class, both in terms of socio-economic class and religious caste as well, we aren't at the same level, and the level freedom of expression we have cannot ever compare to the youth out in South Punjab, out in Karachi, those Afghan refugees. They can never compare to us. So how do you feel that a social contract that is based on law and order as a primary purpose can ever ensure those two things to make sure that the rest of our youth actually get a chance to have an enabling environment? First of all, I understand your presumption of feeling privileged and at times even as a victim of that available privilege. This is a kind of a syndrome many individuals go through, and they feel that we are at an advantageous situation from the rest of our compatriots. So they are at a disadvantaged position, and they look at them as a victim card. My experience is life is a bit different, you know. I've done my graduation as a private student from Balochistan University. I've done my BA as a private entity. I've been able to talk to Oxford Union and Harvard Forum of Pakistan. That same individual which you are referring to, I'm the product of that experiment. I have been raised in Quetta. I was born in Quetta. I was raised in Quetta. I attended a school till class 7th in Quetta. And then I went for a scholarship, a student to Cadet College Cohort for 3 years, and then returned to Quetta. Okay? All my life, what I have done is that I've taken or I've been dependent on books, and I have encouraged myself that my thoughts are stimulated by the new concepts and ideas. आप क्वेटा में कहाँ से? जिनाब से। पश्तून है? ओ सर पश्तून है। बच्चों के पश्तून? सैयद हम सर। सैयद तो करबला है? ओ सर। अच्छा, वो ये लास्ट क्वेश्चन इससे आ गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था सर, जब आप इलेक्ट हुए थे ना एज अ केयर टेकर प्राइम, ठीक है सिलेक्ट हुए थे। अच्छा, मैं सिलेक्ट भी नहीं हुआ था, मैं नॉमिनेट हुआ था। चलो, तो बलूचिस्तान के लोगों को आपसे सर बहुत तवक्को थी कि आप जो है ना पहली बार एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आप आए हैं इतने वक्त में, तो आप बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और क्या कहते हैं एक ऐसी अप्रोच लेकर आएंगे कि जितने भी रिजर्वेशंस हैं, चाहे पश्तून्स के हैं चाहे बलोचों के हैं, वो सब आप हल करेंगे। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि वो जो कुछ लाख से किला सैफला था कि डबल रोड बन रहा था, वो भी रुक गया है सर। और दूसरा ये जो अफगान रिफ्यूजीज का मसला आ गया है सर। आप कहाँ से हैं? मैं क्वेटा से हूँ सर।
सर क्वेटा की हाफ पॉपुलेशन, हाफ जो कारोबार है, जो बिजनेस है सारा, वो अफगान रेफ्यूजीज रन करते हैं. तो अगर ये सख्त और स्ट्रिक्ट डिपोर्टेशन आपने जो स्टार्ट की है सर, इसकी वजह से आपने ये कॉन्सिक्वेंसेस सोचे कि क्वेटा में और बलूचिस्तान में स्पेसिफिकली वो पॉपुलेशन जो पहले से ही इतनी ज़्यादा अग्रीव्ड है और इतने उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर क्या गुजरेगी, और ये जो एक ना वेव है टेररिज्म की, इसको कितना जो है ना इस डिपोर्टेशन और इस सारे मसले से कितनी जो है ना उसको एक ग्रोथ मिलेगी. तो क्या आपने इसके बारे में कोई एक ना इन्फॉर्म डिसीजन लिया, या कोई आपने, मुझे तो नहीं लगता कि आपने कोई इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो बलूचिस्तान से हों चाहे वो केपी से, आपने उनको भी जो है ना लिया होगा. एक वो जो पीएम की एक स्पेसिफिक काबीना होती है, वो सबसे इलीट और टॉप लेवल वाले वो डिसीजन लेते हैं सर. तो माय क्वेश्चन टू यू दैट कि आपने इस मसले को कैसे अप्रोच किया. आप क्वेटा में कहाँ से? पश्तून है? ओ सर पश्तून है. पश्तून के पश्तून के सैयद ही हम सर. सैयद इधर करबला है. ओ सर. अच्छा, वो ये लास्ट क्वेश्चन इससे आ गया. एक तो बार बार मैं ये गुजारिशात तो नाज़रीन, जो आपने अभी ये सारी वीडियो फुटेज देखी, बच्चों के सवाल सुने, और सुनने में आ रहा है कि बच्चों ने जब अनवर काकर साहब वहां से चले गए, उसके बाद अब उनके लिए नमन यूनिवर्सिटी में काफी मुश्किलात हो गई हैं. खास तौर पर उस बच्चे के लिए जिसने आप ये कहा था कि सर आपको टाइम की और तालीम की कदर नहीं है. और अब इसमें किस हद तक तस्दीक है, किस हद तक ये सच्ची खबर है, इस पे मैं और मेरी टीम कंप्लीट सर्चिंग कर रहे हैं. जैसी ये कंप्लीट सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमारे पता चल जाएगा ये खबर फेक है कि रियल है. उसके बाद इस पे हम लोग बनाएंगे, अगर रियल हुई तब भी और फेक हुई तब भी. क्योंकि ये भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि बच्चों के साथ बाद में बहुत ज्यादती हो रही है, बच्चों को मेंटली तौर पे डिस्टर्ब मसाइल से दरपेश हो रहे हैं, उनको ज़हनी तौर पर अजियत दी जा रही है. लेकिन ये कंफर्म न्यूज अभी मेरे पास नहीं आई. अभी जो मैंने अभी जिक्र किया आपके साथ बच्चों वाली वो फुटेज चलाने से पहले कि भी एक अफगानी अनवर हक काकर साहब के बारे में क्या कह रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ. और उसके बाद जो मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चों को लेकर, वो भी आपको बताऊंगा. पहले ये आप फुटेज देख लीजिए, क्योंकि वो बंदा ये कह रहा है कि अनवर हक काकर साहब 20 साल तक बरतानिया में अफगानी पासपोर्ट पे रहे, और वहां पे उनका जो घर है, जो चीजें वहां पे, वो सारी उसको पता है, और ये अफगानी रेफ्यूजी है. और ये बात सच है झूठ है, लेकिन ये मीडिया पे आ चुकी है. अब इसकी तस्दीक होना बाकी है कि वाकयातन ये रियल है कि फेक है, क्योंकि ये मीडिया पे आ चुकी है और बहुत तेजी से वायरल हो रही है. इस वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो को भी साथ में शेयर करता हूँ. ये वीडियो आप देखें, उस अफगानी की बातें सुने. आपके वजीर आजम ये काकड़ साहब जो है 15 साल अफगान पासपोर्ट पर बरतानिया में रिफ्यूजीज थे. अभी भी उसका घर है उधर, इसका बहन है, इसकी फैमिली अभी भी लंदन में. मेरे पास सारे लोकेशन और रिपोर्ट मौजूद है. आपके वजीर आजम ये काकड़ साहब जो है 15 साल अफगान पासपोर्ट पर बरतानिया में रिफ्यूजीज थे. अभी भी उसका घर है उधर, इसका बहन है, इसकी फैमिली अभी भी लंदन में. मेरे पास सारे लोकेशन और रिपोर्ट मौजूद है. तो नाज़रीन, आपने उस अफगानी की बातें भी सुनी, और अब लास्ट पे आपको एक बात कहकर इजाजत चाहूंगा और व्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करूंगा. और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे, जिस तरह आपने पहले मेरे व्लॉग को लाइक किया, वॉच किया, शेयर किया, इसी तरह इस व्लॉग को भी प्रमोट करेंगे, इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और वॉच करेंगे, और मेरी हौसला अफजाई बनाएंगे. और वो बात यह है कि सोशल मीडिया ही नहीं, सैटेलाइट मीडिया और प्रिंट मीडिया, सब पे एक ही बात है कि जो बात इमरान खान ने की थी कि बच्चों में शऊर आना चाहिए, तो वो शऊर यही है. यही वो शऊर है जो बच्चों में दिया गया इमरान खान की तरफ से, कि वो अपने हक के लिए बात करते हैं, वो सवाल करते हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब देने पर जब आप लोग कासर होते हो, तो आप लोग उन पे पाबंदियां शुरू करवा देते हो, उनके लिए मसले मसाइल पैदा करवा देते हो. तो खुदारा ये ना करे, और मेरे मुल्क पाकिस्तान को बाइज्जत तरीके से दुनिया में चलने दें. अल्लाह आपका निगहबान. पाकिस्तान
जिंदाबाद।